Students, hello. This is a class for BA Part First English Literature students, and we will be reading a literary term, restoration. I am your English teacher, Dr. Anil Dadhij. This is the photograph of English king Charles II, who became king in 1660, and his monarchy was restored. How we will study in the later part, but this is very important. Therefore, I have put this picture uh, for you to see. Actually, there occurred a civil war. एक आम जनता का युद्ध जिसको कह सकते हैं, that happened. The outcome of civil war in England during 17th century was threefold. इसके जो परिणाम थे सिविल वॉर के, they were threefold. तीन तरह से you can say in short, in summary. क्या परिणाम हुआ? The trial and execution of Charles I. इंग्लैंड के राजा होते थे चार्ल्स फर्स्ट, उनके खिलाफ ये सिविल वॉर हुआ और 1649 में चार्ल्स फर्स्ट पर मुकदमा चला, दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल, और उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन किया गया. एग्जीक्यूशन मीन्स ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज किल्ड, और उनका सर was his head was placed on the palace wall, it is said. So or no other English king is killed, or you can say there was no revolt after that. So this is very important event in the history of English people. The trial and execution of Charles I in 1649. पहला important issue आपको याद रखना चाहिए. The exile of his son Charles II. उनके बेटे चार्ल्स सेकेंड, he was exiled. exiled मतलब देश से निकाल देना. तो he went to France, जहाँ उसकी मदर बिलोंग करती थी. तो the exile of his son Charles II in 1651, and ultimately the replacement of English monarchy with Commonwealth of England. England is a, you can say, स्टेट ऑफ मोनार्की. वहाँ राजशाही चलती थी. उस राजशाही को, मोनार्की मीन्स राजशाही, उसको रिप्लेस किया गया विद कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट. और ये कब से शुरू हुआ? विच फ्रॉम 1653. 1653 में शुरू होती है एज द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, जिसमें कौन कौन शामिल है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड. तो ये कॉमनवेल्थ हुई एंड unified the British Isles under the personal rule of Oliver Cromwell. नाम को कॉमनवेल्थ था, लेकिन it was under the rule of Oliver Cromwell. You have to remember this name. Oliver Cromwell led this civil war. ये जो सिविल वॉर था, गृह युद्ध जिसको कह सकते हैं, ये किसकी लीडरशिप में लड़ा गया? ओलिवर क्रॉमवेल की लीडरशिप में. एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ कॉमनवेल्थ from 1653 to 58, and briefly his son Richard 58 to 59. एक साल उनके बेटे ने रूल किया, लेकिन उसके बाद ultimately what happened? Monarchy was restored. The execution of Charles I was particularly notable. ये सारी घटनाओं में सबसे important notable चीज़ क्या है? Execution means killing, murder of Charles I was particularly notable, given that an English king had never been executed before. पहले किसी राजा को मारा नहीं गया था, पहली बार ऐसे मारा गया. However, the restoration of Charles II in 1660 marks the beginning of a new era, both in the life and literature of England. 1660 में इंग्लैंड के जो लीडर्स थे, दे कॉल्ड चार्ल्स सेकेंड बैक फ्रॉम फ्रांस. वापस बुलाया उन्होंने और उनको रीस्टोर किया ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के सिंहासन पे. दिस इज कॉल्ड रेस्टोरेशन. द किंग वॉज रिसीव्ड विद वाइल्ड जॉय ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल. एक्चुअली द पीपल ऑफ इंग्लैंड वर टायर्ड ऑफ द हार्ड रूल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, जिन्होंने ये सिविल वॉर लीड किया था.
पहले जनता को लगता होगा कि ठीक है वो, लेकिन उसका रूल वॉज वेरी हार्ड एंड देयर फॉर दे वर टायर्ड ऑफ हिज रूल, और व्हेन द rule was changed, when Charles II was called back, so people were very happy. The king was received with wild joy on his return from exile. He was exiled, देश निकाला था उनको, तो जब वो वापस आए तो people were very happy. The change of government from commonwealth to kingship, अब कॉमनवेल्थ बदल गई है किसमें, राजशाही में, कॉरस्पॉन्डेड टू ए चेंज इन द मूड ऑफ द नेशन, उससे देश का मूड भी बदला. English literature written after the restoration of the monarchy in 1660, following the period of the Commonwealth, is generally termed as a restoration period. We all know now. Some literary historians speak of the period as bounded by the reign of Charles II, जो कब से कब तक है, 1660 to 85, while others prefer to include within its scope the writings produced during the reign of James II, 1685 to 88, वहाँ तक फैलता है. And even literature of 1690s is often spoken of as restoration only. ऐसा कुछ अलग अलग क्रिटिक्स मानते हैं. तो वी कैन से लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग 1660 to 1690, वो जो लिटरेचर है वो सारा रेस्टोरेशन एज में काउंट कर सकते हैं. बाय द टाइम हाउएवर द रेन ऑफ विलियम थर्ड एंड मैरी सेकंड, और ये कब शुरू हुआ, 1689 to 1702, the ethos of courtly and urban fashion was as a result of sober Protestant and even pious, in contrast to the intellectually libertine spirit of court life under Charles II. Intellectually libertine means free spirit of court life. Charles II was very easy going king. उन्होंने सब कुछ फ्री किया, तो उस टाइम जो लिटरेचर लिखा गया दैट वाज ऑफ फ्री स्पिरिट. लेकिन उसके बाद जो लिखा उसमें थोड़ा रैशनैलिटी आई, सोबरनेस आई, और वो प्रोटेस्टेंट काइंड का वो जो लिटरेचर था वो दैट वाज प्रोड्यूस्ड, यू कैन से. मैनी टिपिकल लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं द नोवेल, बायोग्राफी, हिस्ट्री, ट्रैवल राइटिंग एंड जर्नलिज्म, ये सारी गेन्ड कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड. ये सब लिखी गई and they were well written when new scientific discoveries and philosophical concepts as well as new social economic conditions came into play. वो सब लिखी जा रही थी, मतलब the world was changing into becoming modern. There was a great outpouring of pamphlet literature too. There were a lot of pamphlet writing in that period. Much of it was politico-religious, political था, religious था, pamphlet writing. While John Bunyan's great allegory, Pilgrim's Progress, it's a long work, बड़ा narrative work है, Pilgrim's Progress, and it is an allegory. Allegory is a form of, you can say, writing, जिसमें आप कहते कुछ हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है. ये एक कहानी कोई और होती है और बात कुछ और करते हैं. जैसे किसी कैरेक्टर का नाम सत्यवान हो एंड यू नो दैट दिस कैरेक्टर विल बी फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ, तो दैट इज एलेगोरिकल. सो दिस बुक, John Bunyan's great allegorical book Pilgrim's Progress, also belongs to this particular period. Much of the best poetry, notably that of John Dryden, you have already read John Dryden's two poems, Shadwell and Alexander's Feast. So John Dryden की जो poetry है, the great literary figure of his time in both poetry and prose. He is a critic also, extraordinary critic in English literature. और कौन? The Earl of Rochester, Samuel Butler and John Oldham. ये सारा जो जनरली लिटरेचर था, इनकी जो पोइट्री थी, दैट वाज सटायरिकल इन नेचर, वो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक थी, एंड लेड डायरेक्टली टू द लेटर अचीवमेंट्स ऑफ
Alexander Pope, Jonathan Swift and John Gay in the Augustan age. इनके बाद की जो एज है उसको Augustan age कहा जाता है. And in that age, these were the prominent writers, Alexander Pope, Jonathan Swift and John Gay. They also wrote satirical works, and they wrote great satirical works. So they were actually, you can say, inspired by John Dryden. The Restoration period was, above all, a great age of drama also. Heroic plays influenced by principles of French neoclassicism. They were influenced by French literature, French drama. They enjoyed a vogue. Vogue means fashion. But the age is chiefly remembered for its glittering, मतलब shining, critical comedies of manners. मतलब ड्रामा में क्या लिखा जा रहा था? Comedies of manners by such playwright as George Etheridge, William Wycherley, Sir John Vanbrugh, and William Congreve. So this kind of, you can say, a literary atmosphere prevailed during Restoration age. So now you can say the political and literary scenario of Restoration age is summarized in this lecture. Thank you very much for listening patiently. If you have any queries, any doubts, you can talk to me or you can send your queries on WhatsApp. Right? Thank you.